Yeah. Now the session is going I have to explain what today I have to explain of Robert Browning, who was an optimistic poet of Victorian age, and the name of the poem is My Last Duchess. Already I delivered a lecture on My Last Duchess that was in two parts, and you came to know about what is dramatic monologue. You came to know about uh, who was Duke and how was Duke and why did he kill his last Duchess? These things you came to know. Now you will come with what? With the beautiful lines composed by whom? Composed by uh, that means a well-known optimistic poet Robert Browning. Let me share you the image. Yeah, I think today you will enjoy these beautiful lines and you find I yeah that is a yeah this one. If it's visible, let me know. If it's visible, let me know. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Okay. I will explain it. You find that here. What do you find? You find it's a dramatic monologue. Already I explained, and it's a dramatic monologue composed by Robert Browning, husband of Elizabeth Barrett Browning, an optimistic poet of Victorian age. And even you come to know he was a well-known lyricist of that age. And you also come to know that in this dramatic monologue, he presents the nature or psyche of a duke who has killed his last duchess. And one portrait of that last duchess is put in his art gallery now and envoy envoy and envoy, or you can say a messenger from the neighboring countries came there with the proposal of marriage, and he goes with that envoy in art gallery and just tells about his last duchess and explains how she was, why did she murder, and why all her smiles stopped. These things you come to know. I just want to tell you this poem is written in, you can say, dramatic monologue form. This poem is written. Second point, I want to tell you this poem is a well known poem of Robert Browning that establishes him as king of dramatic monologue. This poem, you find it's written in heroic couplet, run on heroic couplet. These things already I explained, but you have only to go with these lines which I'm going to recite and explain. That's my last duchess. It seems that someone is indicating that's my last duchess painted on the wall. Painted on the wall, it means that that duchess is not, you can say, you don't find the flesh and blood of duchess, but that duchess is in portrait, and that portrait is painted on the wall, hanging on the wall. Oh, there is someone, it means that someone is indicating and someone is saying to someone. And who is someone? The duke is saying to envoy. Already I explained you ki duke is speaker, envoy is the envoy or messenger of the neighboring country who came with the proposal of marriage of the neighboring king's daughter. And you here find uh, Duke goes with that envoy in his art gallery and just says, "That's my last duchess. ये मेरी duchess की last duchess की portrait है that is hanging on the wall. That is hanging, yeah, that is put on the wall." Now, एक तो सिंपल सा इंडिकेशन है कि he is indicating, he is saying कि look there. Not he is using the word look there, but with this line you here come to know he is pointing towards where he is pointing at the portrait of the last duchess. Ki look at the
portrait of the last Duchess that is painted on the wall. Second line is very important because in the second line you find irony. Looking as if she were alive. Looking. Look मतलब it seems. ऐसा लगता है as if जैसा कि she were alive वह जिंदा हो. she were alive ये वर्ड ध्यान में रखिएगा. यदि होता if I were यदि होता she were alive ऐसा लगता है जैसे वह जिंदा है या जिंदा थी. लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव. दिस इज एन ironical statement. Why this statement is an ironical? Outwardly it seems that the Duchess is alive, but inwardly you find that she is no more in this world because she has been brutally murdered by the, you can say, servants, yeah, uh, you can say followers of the Duke, because Duke gave command and all her smiles stopped. Looking as if she were alive, I call. I means not the poet. I means the speaker of the poem. And who is the speaker of the poem? Duke is the speaker of the poem. I call. I call it. Whom do I call it? I call this piece. What is that piece? That piece means that portrait. That portrait is the portrait of whom? That portrait is the portrait of the Duchess, last Duchess. And how do I see it? I call it a piece of wonder. That portrait surprises me. That portrait surprises me. वाई इट्स अ पीस ऑफ वंडर. कहते हैं ना कि एक नायाब तोहफा है अपने में जो है. तो मेरे यहाँ आर्ट गैलरी है. उस आर्ट गैलरी में देर आर सो मेनी पोर्ट्रेट, देर आर सो मेनी पिक्चर्स, बट अमंग दोज पिक्चर्स दिस पीस इज अ वंडरफुल पीस. I call it a piece of wonder. It's matchless, it's unique, it's incomparable, it's a unique piece. And it was prepared by whom? Now he tells that this painting, this portrait was prepared by Fra Pandolf. Who is Fra Pandolf? Fra Pandolf is an imaginative painter. He was not a real painter. But this Duke thinks, Duke gives this name, yeah, the poet gives this name. So Fra Pandolf was an imaginative painter and says that Fra Pandolf's hands worked busily a day, worked busy a day. Fra Pandolf hands worked busy a day. फ्रा पैंडाल्फ ने एक दिन पूरा खर्च किया. फ्रा पैंडाल्फ spent the whole day in creating this beautiful piece of wonder. In creating this beautiful piece of wonder. So you find that what you find that this was what this was a beautiful piece prepared by whom? Prepared by Fra Pandolf, and this piece was a piece of wonder. And you find that this was a piece of wonder because Fra Pandolf used this piece, used his whole day to ultimately prepare this wonderful piece. It's a piece of wonder. It's a, you can say, matchless piece. It's a unique piece. It's a incomparable piece. This piece is not available anywhere. Even I myself have an art gallery, and there are so many portraits, but this portrait can't be compared. And there she stands. Now you find there she stands. Now अभी तक तो उसको उसकी पोस्ट से एड्रेस किया गया बिकॉज ही वॉज अ ड्यूक एंड हिज वाइफ हैज बीन एड्रेस्ड एज डचेस. बट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम he is using for what he is using the word she. And when you use the word she to your wife, it seems that you don't have affection for her because you are not using the word "Ki my dear a sweet wife," but he is using the word she.
and she is used for any woman. It also shows his psyche. And what psyche shows? It shows that this man, this duke, does not have any love for his wife. This is why he says, and there she stands. और अब वह वहां खड़ी है, वह वहां खड़ी है. It means that she is in, where she is in portrait, and that portrait is on the wall. And it seems, उसके पहले उसने क्या कहा था कि looking as if she were alive. So this very line, she also indicates that it shows the psyche of that duke. That duke does not have any love, that duke does not have any affection to her last duchess. Even we don't know whether that is alive or dead. In the very beginning of the line, I told you ki what happened with that duchess, but if he uses the word she for her, it shows that he is treating that duchess as a common woman. Now, will it please you sit and look at her? This is a very important question. He is asking this question to whom? To envoy. Will it please you sit and look at her? थोड़ी देर आप यहाँ बैठिए और उधर देखिए. Why the duke is saying this word? Ki sit and look at her, because that character, that portrait is very important. Because duke will tell about that portrait, duke will tell about that duchess, yeah, his lost duchess, what she was, how she was, what was her manner, and what happened with her. Because directly or indirectly, duke wants to give a message to envoy. This is why, and says, just take your place, have a seat, and take rest, and cast your eye, cast, look at her. I said, मैंने कहा, from Pandalf by design for never read. From Pandalf ने ऐसा डिजाइन, already I told you कि from Pandalf is an imaginative painter by design, design which was prepared by Fra Pandal for never read. ऐसी खूबसूरत तस्वीर बनाई कि आज तक इसके पीछे की सीक्रेसी को कोई जान नहीं पाया. नो वन कुड नो, नो वन कुड रीड how it was done, how it was prepared, yeah, what is the secrecy behind her smile. What is the secrecy behind her smile? किसकी smile के पीछे? Duchess की, because she is smiling in the portrait. Now, this is a very important. Strangers like you. It means that एक तो स्पीकर हो गया. हु इज द स्पीकर? द ड्यूक इज द स्पीकर. और एक आपने लिसनर को पाया. हु इज द लिसनर? द लिसनर इज द इनवॉय. जो स्पीकर है, जो लिसनर है, उन दोनों के बीच में एक कैरेक्टर है. उसका क्या नाम है? डचेस. डचेस डजंट स्पीक. डचेस का वी ओनली फाइंड व्हाट वी ओनली फाइंड द पोर्ट्रेट. वी डोंट सी डचेस इन द फॉर्म ऑफ फ्लेश एंड ब्लड. जीवित अवस्था में हम नहीं देखते हैं. फिर कहते हैं कि ये जो फोटो मैं आपको उसका दिखा रहा हूं, जो पोर्ट्रेट मैं आपको दिखा रहा हूं, यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन बट स्ट्रेंजर्स लाइक यू. बल्कि आप जैसे न जाने कितने अजनबी. स्ट्रेंजर्स लाइक यू आर नॉट द वन. उन्होंने कहा कि स्ट्रेंजर, इट मींस दैट सो मेनी पर्सन कम. स्ट्रेंजर्स लाइक यू, आप जैसे कई लोग आते हैं. दैट पिक्चर्ड काउंटिनेंस, और आकर के वे लोग उस पिक्चर पर ही कंसेंट्रेट हो जाते हैं. उस पिक्चर की काउंटिनेंस पर, उसके फेस पर, उसके अपीयरेंस पर. दे ओनली लुक, they only look, they cast their eye, they look at the face of that picture. That is the, so you are not the first man. Just sit here
Look at her, and I want to tell you, you are not the first. Strangers like you, and this is a very important point. He is using the word strangers. इट मीन्स दैट कि वो इनवाय तो शादी का प्रपोजल लेकर के आया है, लेकिन वह उसको क्या कह रहा है, तुम भी मेरे लिए अजनबी हो, कोई बहुत करीबी नहीं हो। ये उसका इसका साइकी इंडिकेट कर रहा है, उसका एरोगेंस दिखा रहा है, उसका घमंड दिखा रहा है कि यू आर अ स्ट्रेंजर फॉर मी। Though he is the invite, he came with the proposal of marriage. He knows it very well that he is an invite of the neighboring kings. Neighboring kings. तो अगर इस तरह से strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance. Strangers like you came, they cast their eye at her and they tried to know the depth and passion of its earnest glance. इस पोर्ट्रेट में जो इतना अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को जानने का उन्होंने खूबसूरत प्रयास किया, उसकी गहराई में जाने की कोशिश की, उसके पैशन को समझने की कोशिश की। व्हाट इज द कॉज ऑफ स्माइलिंग बिहाइंड, you can say, behind this smile, what are the points and how this picture has been prepared by Fra Pandal. Everyone wants to know the secrecy, the mystery of her smile. हर आदमी उसकी स्माइल की सिक्रेसी को, मिस्ट्री को दे वांट टू नो। बट उसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया, दे कुड नॉट नो। उसका ये कहना था कि आप जैसे तमाम लोग आए, वे सब के सब इस पोर्ट्रेट की ब्यूटी, इस पोर्ट्रेट की खूबसूरती, इस लेडी की स्माइल को जानना चाहा, लेकिन दे डिड नॉट नो। बट टू माई सेल्फ दे टर्न। उसका आंसर जानने के लिए वे मुझसे मुखातिब हुए। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, दे मीन्स स्ट्रेंजर्स लाइक यू। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन, तब से मैंने क्या किया, जब से लोग मुझे इसके बारे में जानना शुरू किए, तभी से मैंने क्या किया, सिंस देन, तभी से, none puts by none puts by the curtain I have drawn for you, तब से मैंने इस पोर्ट्रेट को पर्दे के पीछे छुपा दिया और आज मैं पहली बार एक कर्टन आपके लिए उठाया हूं। द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू। आई थिंक यू आर गेटिंग माई वॉइस। Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay. Okay. Then he says that for the first time, I just draw this curtain for you. I just want to know why this man, why the Duke draw the curtain for this invite? क्यों उसके लिए ऐसा किया? What might be the cause? What might be the reason? What do you think? Because he wants to give some message to that envoy. And what the message he wants to give? He wants to tell that envoy that my last duchess was how kind-hearted, generous, benevolent, and gives her smile to everyone. And I didn't like her nature. I tried to say, but I didn't stew before her. And what happened? In the end, I gave command to my servants or followers, then all her smiles stopped. Indirectly, he wants to say, what type of man am I? If you have come here with the proposal of marriage, then go and tell the coming girl who will be my better half, who will be my spouse. She must know what am I. तो वो उसको केवल इसलिए दिखाता है, बाकी सबको तो उसने क्या किया, उसको पर्दे के पीछे रख दिया, लेकिन उसको इसलिए दिखाता है कि जा करके उस आने वाली लड़की को ये बता देना कि मैं कैसा हूं। वो पहले से ये चीज
समझ करके आए, इस घर में कदम रखे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ड्यूक इज अ सिनिस्टर ड्यूक, ड्यूक इज अ हार्टी ड्यूक, ड्यूक इज अ स्टबर्न ड्यूक, ड्यूक इज अ ग्रीडी ड्यूक, ड्यूक इज अ narrow minded duke. Duke is a such a type of duke who believes in patriarchy, who believes in masculinity, who does not have any idea how to give freedom to women, yeah, who doesn't believe in the concept of equality. The curtain I have drawn for you, but I seemed as they would ask me. और मुझे लगता था कि वे क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसके साथ क्या हुआ, ये कौन है। इफ दे डस्ट, यदि अगर उनमें डस्ट था, डेयर था, हाउ सच अ ग्लांस केम देयर, वे साहस इकट्ठा करके जानना चाहे कि इतना खूबसूरत ग्लांस, हाउ सच अ ग्लांस, हाउ सच एन अपीयरेंस, हाउ सच अ स्माइल केम ऑन हर फेस. So not the first, you are not the first. Are you to turn and ask thus? आप पहले नहीं है जो मेरी ओर मुड़ करके ये क्वेश्चन जानना चाहते हैं. सो नॉट द फर्स्ट, किसको कह रहा है, इनवाय को कह रहा है. यू आर नॉट द फर्स्ट हु वांट्स टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ सच अ ब्यूटी केम ऑन हर फेस, या हाउ such a smiling face was created by Ifra Pandal. You are not the first. But men like you, they came, they wanted to know. This is why I put it behind the curtain, and I draw the curtain only for you because I want to give you some message. Are you to turn and ask the sir? It was not her husband's presence only. It's a very important thing. और अब जाकर के बहुत अदब से कह रहा है अपनी बात को. देखिए, जब उसको ऐसा लगा कि अब मैं अपने दिल की पीड़ा जो है उससे बताने जा रहा हूं, तो वो उसको बताना चाहता है और एड्रेस क्या करता है, सर कहता, सर ऐसा लगता है थोड़ा सम्मान दिखा रहा है. इट वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली. ये जो स्माइल आप उसके चेहरे पर देख रहे हैं, ये जो है केवल ऐसा नहीं है कि वह अपने हस्बैंड को जब देखकर मुस्कुराती थी तभी ऐसा मुस्कुराती थी. इट वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली. शी गेव सच स्माइल नॉट ओनली फॉर हर हस्बैंड, कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय. और इसको मैं क्या कहता हूं, स्पॉट ऑफ जॉय कहता हूं. स्पॉट ऑफ जॉय का मतलब ये होता है इनटू द डचेस चीक. जब भी वह मुस्कुराती थी उसके गाल पर ऐसे ही डिंपल निकल आता था. कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक. And he wants to say, not only I, yes, she gave such a smile, not only for me, but anyone who came, anyone who were present, always she gave such a smile. And I didn't like her manner. This is the point. And the people wants to know what is the cause of her smiling. Why do we find a spot of joy into the Duchess' cheek? How did it come? Was it natural? Yeah, did she give to everyone? Yeah, did she give only when Fra Pandal was painting that picture? Then he says that no, no, you are not the first, you are not only the one who wants to know it. Strangers like you came, and I explained them that she gave such a smile, she gave such beauty, she gave such face to everyone. और यही सबसे बड़ा लड़ाई का या झगड़े का कारण था. फ्रा पैंडाल्फ, और ऐसी ही स्माइल उसने फ्रा पैंडाल्फ को दिया. फ्रा पैंडाल्फ चांस, फ्रा पैंडाल्फ को मौका मिल गया टू से कहने के लिए हर मेंटल लैप्स, कि उसके लैप पर जो मेंटल है, जिसे आप कह सकते हैं दुपट्टा जैसा, ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, वह मेरी लेडी की कलाई पर काफी हद तक था. और उसने इशारा किया कि नाउ यू कैन जस्ट पुट ऑफ, एंड ही गॉट अपॉर्चुनिटी टू पेंट दिस पिक्चर. हर मेंटल लैप्स, ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, आर पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस. या तो उसका उद्देश्य था
कि वह एक ऐसी तस्वीर बनाना चाहता था, टू रिप्रोड्यूस द फेम, टू रिप्रोड्यूस, जो कभी, टू रिप्रोड्यूस, उसको कोई दोबारा प्रोड्यूस ना कर सके। आर पेंट मस्ट नेवर होप, पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस, या ही wants to make such a picture कि any other painter never reproduce the faint half flush that dies along her throat। और उस पेंटर ने क्या किया, दैट पेंटर टुक ओनली हर what, ओनली हर फेस, from, you can say, the whole face he took and painted in this way, as it seems the whole beauty appears only on her face। Our paint must never hope to reproduce the faint half flush, आधा शर्मीला, दैट डाइज, और ये शर्म नजर आती है, along her throat, उसके गले तक। इट मीन्स दैट a type of, you can say, blushing या shy nature, shy face we find that comes where along her throat, such stuff was courtesy। इस तरह का जो उसका स्टफ था यह अपने में courtesy था। What do you mean by courtesy? The word courtesy refer कि वह अपना ये तरीका हर आदमी को देख, यह उसका courtesy था, यह उसका एटिकेट था, यह उसका मैनर था। She thought and cause enough for calling up that spot of joy, and cause enough for calling up, और यही चीजें थी कि वह जो है हमेशा सबको देख के मुस्कुरा देती थी, और ये उसको उसने अपनी कर्टिसी का हिस्सा बना लिया था, एटिकेट का हिस्सा बना लिया था। मतलब शी गेव हर स्माइल टू एवरीवन, नॉट ओनली फ्रॉप एंड डॉल्फ, not only servant, but any strangers like you. If you come and if you want to meet to that last Duchess, she gave her smile everyone because she think that it's the part of courtesy। यह courtesy का हिस्सा है, यह किसी को वेलकम करने का एक तरीका है। She thought, ऐसा उसने सोचा, and cause enough for calling up that spot of joy, and always she gave such a smile। and और मेरी नजर में क्या था, यह एक स्पॉट था, मेरी नजर में यह एक स्पॉट था। नाउ ही इज टेलिंग हर नेचर, आप पूरा उसके नेचर के बारे में जान रहे हैं कि डचेस कुछ नहीं बोल रहे, डचेस इज नॉट स्पीकिंग इवन अ सिंगल वर्ड, बट नाउ यू आर गोइंग टू नो अबाउट व्हाट, नाउ यू आर गोइंग टू नो अबाउट डचेस के बारे में। अब आप समझ रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक या हाउ डू यू फाइंड। एंड हियर यू कम टू नो कि जो डचेस है उसको लेकर के उन्होंने कहा, क्या कहा, she thought and cause enough for calling up that spot of joy, she had a heart, how shall I say। ऐसा लग रहा है कितना ज्यादा पहाड़, टोन को आप देखिए, टोन को पकड़ने की कोशिश करिए। she had a heart, उसके पास ऐसा दिल था, हाउ शैल आई से, मैं कैसे बयां करूं। ऐसा लग रहा है कि कितना दुख है, कितना दर्द है, कितना सरप्राइजिंग वाली चीज है। कह रहे शी हैड अ हार्ट, उसके पास एक ऐसा दिल था, हाउ शैल आई से, मैं कैसे उसको एक्सप्रेस करूं। टू सून मेड ग्लैड, बहुत जल्दी द्रवित हो जाती थी। काइंड हार्टेड, ऑलरेडी आई टोल्ड यू शी वाज अ काइंड हार्टेड वुमन, काइंड हार्टेड लेडी। टू सून मेड ग्लैड, टू इजली इम्प्रेस्ड, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती थी। शी लाइक्ड व्हाट एवर शी लुक्ड, और वह हर चीज को पसंद करती थी जहां पर उसकी नजर जाती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसकी नजर हर जगह जाती थी। इस लाइन में यहां तक उन्होंने केवल उसके हार्ट को लेकर, उसकी नजर को लेकर के, दीज आर द टू थिंग्स जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। शी हैड अ हार्ट, ऐसा लगता है कि जैसे कितने बड़े डॉक्टर रहे हों हार्ट के, और उसके बारे में जानते हो कि हार्ट कितने तरह का होता है, क्या होता है, क्योंकि एक थॉट होता है, एक मेंटेलिटी होती है। एंड दैट वाज व्हाट, दैट वाज अ मेल मेंटेलिटी, कि दैट वुमेन शुड नॉट गिव हर हार्ट टू एनीवन। यहाँ पे हार्ट देने का बात नहीं थी, उसने उसको अपना कर्टसी समझा, और इन्होंने उसको दूसरी ढंग से लिया, और उन्होंने कहा कि शी हैड अ हार्ट, हाउ कैन आई टेल यू, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू। ऐसा लगा कि पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा था। टू सून मेड ग्लैड, बहुत जल्दी खुश हो जाती थी। टू इजली इम्प्रेस्ड, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती थी। शी लाइक्ड व्हाट एवर शी लुक्ड ऑन, हर चीज को पसंद करती थी जहां पर उसकी निगाह जाती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसकी निगाह हर जगह जाती थी। तो फ्रॉम पैंडाल का कॉन्सेप्ट पूछा जा चुका है। इन वाई यू हैव टू रिमेम्बर, ड्यूक का जो है
फेवरेट डचेस होता है, ये भी पूछा जा चुका है। ड्यूक का नाम, ड्यूक कहाँ के, ड्यूक ऑफ फेरारा, उनका नाम क्या था, अल्फांसो था। ऑलरेडी ये सब एक्सप्लेन किया जा चुका है। पोयम किस में लिखी गई है, पोयम रन ऑन हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, या आप कह सकते हैं जाबी में स्टाइलिंग होगा। नाउ जस्ट शेयरिंग यू अनदर इमेज, दूसरी इमेज में शेयर कर रहा हूँ, या you another image. Uh, you find this is another image. Is it visible? Is it visible? Yes, sir. Okay, okay, okay. Give me only 10 minutes. I will explain it. Yeah. Sir, it was all one. My favor at her breast. कह रहे कि सब कुछ अपनी जगह थी, लेकिन जो मेरा फेवर था उसका ब्रेस्ट था। Here breast in the sense he just wants to tell you कि I have given what I have given a precious gift which she was wearing around her neck. That is known as, आप कह सकते हैं हिंदी फिल्मों में कि नौलखा हार उन्होंने दे दिया था। ऐसा लगता है कि पूछे मत, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप लोग जो है ड्यूक ना बन जाइएगा, बस यही सजेशन है। सर इट वॉज ऑल वन ऑफ माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट। उनका ये कहना था कि आई गेव हर वॉट, एक ब्यूटीफुल हार जो दिया गया था, जो मेरे परिवार में सदियों से चला रहा था, 900 साल पुराना वो गिफ्ट था। जब वह उसको पहनती थी तो उसमें ऐसी चमक आती थी जैसे कि वेस्ट में जब सूरज डूबता है जो लालिमा उसकी होती थी, द सेम टाइप ऑफ शाइनिंग वन कैन सी देयर। फिर उसके बाद कहते हैं द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट। सर इट वॉज ऑल वन माई फेवरेट एट हर ब्रस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, द बफ ऑफ चेरी सब ऑफिशियस फूल। वो कहते कि मेरी तो ये पसंद थी, लेकिन मेरी पसंद को उसने कभी महत्व नहीं दिया। फिर अब क्या करें, द बफ ऑफ चेरीज ऑफिशियल फूल। अगर कोई नौकर जो है चेरी का, चेरी गार्डन से अगर कोई नौकर एक टहनी, बफ माने टहनी, अगर उसकी टहनी, चेरी जो होता है पेड़, अगर उसकी टहनी तोड़ करके लाता था कोई मूर्ख, ऑफिशियस फूल के मतलब मेरे उनके घर का नौकर अगर लाता था, ब्रोक इन द आर्चर, उसको बगीचे से तोड़ करके लाता था फार हर उसके लिए, तब भी वो क्या कहती थी, वैसे ही मुस्कुरा करके उसका स्वागत करती थी। दिस वॉज द बिगेस्ट कॉज। अगर कोई नौकर जो है उसको जो है क्या करता था, ऐसा कुछ लाता था जो कि ऑफिशियल फूल होता था, इफ ही ब्रॉट दैट you can say buff of cherries, she smiled in the same way, she smiled in the same pattern, she gave the same smile as she has given the smile when I gave her a necklace which she wore around her neck, that was you can say a unique piece, and just you can say 900 years old gift, that was just gone from generation to generation, या used from generation to generation. नाउ, और फिर दूसरी आदत उसकी बता रहे हैं, द व्हाइट म्यूल। कभी कभार वो क्या करती थी, सफेद म्यूल की, म्यूल का मतलब होता है खच्चर, सफेद म्यूल को लेकर के शी रोड विद राउंड द टेरिस, वह टेरिस पर चढ़ जाती थी या टेरिस पे जाकर के सवारी करती थी सफेद खच्चर पर। ऑल एंड ईच, और जितने भी लोग गुजरने वाले होते थे, वुड ड्रा फ्रॉम हर लाइफ, जो भी उसकी ओर अभिवादन उसको करता था, ऑल वुड ड्रा फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, और वह सबका हाथ हिलाकर अभिवादन करती थी। इसका मतलब वो किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं करती थी। शी वेलकम्ड एवरीवन। और कैसे वेलकम करती थी, आर ब्लश एट लीस्ट, कुछ नहीं, हाथ तो हिलाती थी, सबसे बड़ी उसकी खासियत ये थी कि वो ब्लश हो जाती थी, शर्मा जाती थी, मुस्कुरा देती थी, और ये चीज ड्यूक को पसंद नहीं था। और उन्होंने फिर आगे कहा, शी थैंक्ड मेन, वह हर आदमी को धन्यवाद देती थी, सबसे गुड बाय कहती थी, गुड बट थैंक्ड, लेकिन कैसे धन्यवाद कहती थी कि मेरे पास शब्द नहीं, मैं कैसे कहूं। मतलब उनका कहना था कि जो थैंक कहती थी, वह थैंक का तरीका भी उसका अपने में अद्भुत था, और ये मैं बता नहीं सकता कि वह कैसा था।
somehow I know not, कह रहे मैं कैसे बताऊं कि वह कैसे कहती थी, एज इफ शी रैंक, वह वैसे ही कहती थी जैसे कि उसने रैंक किया था माई गिफ्ट ऑफ अ 900 years ओल्ड नेम, मेरे परिवार में 900 सालों से जो गिफ्ट चला आ रहा था, विद एनीबॉडीज गिफ्ट, जैसे उसने जो है उस गिफ्ट की तुलना किसी भी दूसरे आदमी के द्वारा दिए गए गिफ्ट से किया था। The same pattern she adopted to give thanks to me and everyone. It means that she didn't mark any distinction between her husband and the common man. She thanked me and she thanked even the officious fool. She thanked even the passers-by. She thanked everyone whoever just welcome her, yeah, whoever just shake her hand, या हिज हैंड, एंड शी वेलकम एवरीवन। सो यू फाइंड दैट कि उसने कभी नहीं अंतर समझा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हु वुड स्टूप टू ब्लेम द सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, आखिर कौन उसके सामने झुकता, ये मास्कुलिटी नजर आ रही है। हु वुड स्टूप टू ब्लेम, उसके ऊपर कौन दोषारोपण करता, कौन झुकता, दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, ये कहने के लिए कि ये तुच्छता भरा काम है, कितनी छोटी छोटी तुम हरकतें करती हो। उनका कहना था मैं ड्यूक हूँ, मैं उसका हस्बैंड था, मैं पुरुष था, मैं उसको समझा नहीं सकता था, मेरे अंदर झुकने की कला नहीं थी। इवन हैड यू स्किल, कहते क्या तुम्हारे अंदर कोई स्किल है, इन स्पीच, हैड यू स्किल, क्या तुम्हारे अंदर कोई स्किल है, इन स्पीच, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा शब्द है, विच आई हैव नॉट, हो सकता है तुम्हारे अंदर हो मेरे अंदर नहीं है। जब उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि कौन उसको ये समझाता कि ये तुम्हारी हरकतें मुझे पसंद नहीं है, तो जो वो इनवाय आया हुआ था उनकी तरफ वो लगता है गौर से देखा, तब उसी को वो इनकाउंटर करते हैं कि तुम इतने सरप्राइज हो कि मेरी ओर क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसी कला है, क्या तुम झुकते हो, क्या तुम झुकते हो, या क्या तुम अपनी बीवी को समझा सकते थे। इस तरह का हो सकता है कि एक साइकी ऐसा लग रहा है कन्वर्सेशन में, कहता है मेरे पास तो नहीं है। टू मेक योर विल, आपकी, आपको समझाने के लिए या आपकी अंदर जो इच्छा है उसको समझाने के लिए, क्वाइट क्लियर, मैं स्पष्ट रूप से बतला देना चाहता हूं, टू सच एंड वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, इसके लिए और उसके लिए आप मुझसे नफरत कर सकते हैं, डिस्गस्ट मैंने हेट करना। हियर यू मिस, लेकिन आप यहाँ पर कुछ चीजें मिस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हो सकता है कि मेरी इस बात से आप मुझसे नफरत करने लगे, बट यू आर मिसिंग समथिंग, आर देयर एक्सीड द मार्क, लेकिन आपको वहां पर भी मार्क करना चाहिए कि वो कैसी थी, उसकी आदत क्या थी, क्या वह आउट ऑफ कंट्रोल नहीं थी। एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन, सो अगर वह लेसन लेना चाहती, शिक्षा लेनी चाहती, नॉर प्लेनली सेट, तो उसके लिए जरूरी नहीं था कि उससे स्पष्ट रूप से कहा जाए, वह किसी भी रूप में शिक्षा ले सकती थी। एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी लेसन, अगर वह खुद से लेसन लेना चाहती, शी कैन गेट लेसन। इट डजंट नीड कि हर हस्बैंड शुड make it clear that I am not happy with your manner, with your courtesy behavior. You give your smile everyone, you give your thanks everyone, and you just approve the shaking of hand everyone. These things I don't like. मैं ये चीज उससे कहने वाला नहीं था, उसे खुद से लेसन लेना चाहिए था। हर विट्स टू योर्स, लगता है कि जैसी तुम्हारी बुद्धि है वैसी ही जैसा है, जैसी तुम्हारी बुद्धि वैसी उसकी बुद्धि, दोनों समझदार नहीं, उसको भी जो लपेटे में लेता है। फॉर सूट, लेकिन आपके लिए, एंड मेड एक्सक्यूज, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, कुछ तब तक तब भी कुछ तरीका था झुकने का, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, कुछ हद तक झुका जा सकता था। एंड आई चूज, करे आप जैसे कुछ लोग हो सकते जो थोड़ा बहुत झुक जाए, लेकिन मैंने क्या किया, एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, ओ माय गॉड, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, दिस इज द साइकी, इट शोज द मास्कुलिटी, इट शोज द जस्ट द नेचर ऑफ दैट मैन, कि मैंने कसम खाई कि मैं कभी झुकूंगा ही नहीं, आई विल नॉट गिव एनी एडवाइस, आई विल नॉट गिव एनी सजेशन। और फिर क्या हुआ, ओ सर, शी स्माइल नो डाउट, वह मुस्कुराती थी सबको देख करके, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर वो कहते हैं वेन एवर आई पास्ड है, जब भी मैं उसके पास से गुजरा वह मुझे मुस्कुराई देख करके। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी है जो वहां से गुजरा और उसने अपनी स्माइल उसको नहीं दिया। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। दिस ग्रीव, और इसने मेरे अंदर गुस्से को जन्म दिया, आई गेव कमांड, मैंने आदेश दिया। दिस थिंग यू फाइंड। नाउ लेट मी शेयर द लास्ट इमेज, हियर यू फाइंड, या लेट मी शेयर द लास्ट इमेज।
I will conclude today this poem. You find here, what do you find? You find this is, yeah, this is the last one. Then all smiles stopped. उसकी सारी मुस्कुराहट रुक गई। उसकी मुस्कुराहट से मुझे बेचैनी थी, उसकी मुस्कुराहट से मुझे परेशानी थी। मैं झुकना पसंद नहीं किया। मेरे दिल में दिमाग में ये चल रहा था कि हु पास्ड विदाउट दैट स्माइल, देन आई गेव कमांड, और सारी मुस्कुराहट उसकी क्या हो गई, रुक गई। सो यू फाइंड दिस इज अ वर्ड, दिस इज अ मस्कुलिटी, दिस इज पटियाकी, दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग, एंड ही जस्ट गेव। अगर चाहते तो छोड़ भी सकते थे, लेकिन वो ड्यूक थे, उस समय उनको कोई नियम कानून में कोई बांध नहीं सकता था, अच्छा चलने वाला नहीं था। देयर शी स्टैंड एज इफ अलाइव, फिर कमेंट करा, और देखिए आज भी मुस्कुरा रही है, ऐसा लगता है कि जैसे वह आज भी जिंदा है, अभी भी उसकी मुस्कुराहट गई नहीं है, पिक्चर में भी मुस्कुराई। इट्स अ कमेंट, इट्स एन आयरॉनिकल स्टेटमेंट, वी नो इट वेरी वेल, शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, शी हैज बीन मर्डर्ड ब्रूटली and all her smiles stopped, but this is the statement of deep conviction, it seems that she is even alive today. विल इट प्लीज यू राइज। अब उसके बाद इतना कहानी बताने के बाद कहते हैं, श्रीमान जी केवल हमारा भाषण ही सुनते रहेंगे, हमारी पत्नी का चेहरा ही देखते रहेंगे, या उठ करके चलेंगे भी यहाँ से। अब फिर देखिए कैसे उसको रिब्यूकिंग टोन में कह रहा है, स्कोल्डिंग टोन में कह रहा है, विल इट प्लीज यू राइज, क्या अब आप उठेंगे चलेंगे भी, कि बस यही बैठे रहेंगे, सिंहासन मिल गया है। वी विल मीट द कंपनी बिलो, कुछ नीचे लोग भी है जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। आई रिपीट, लेकिन मैं एक चीज रिपीट कर देना चाहता हूं, द काउंट योर मास्टर्स, जिस काउंट का, जिस राजा का, जिस पड़ोसी राजा का आप क्या कर रहे हैं, नॉन म्यूनिफिसेंस, जिस पड़ोसी राजा का रिश्ता लेकर के आप आए हुए हैं, मैं जानता हूं वह म्यूनिफिसेंस है। म्यूनिफिसेंस माने उदार, लिबरल। इज एम्पल वारंट, उनके पास पर्याप्त धन है, वारंट माने धन। दैट नो जस्ट प्रिटेंस, लेकिन मैं कोई बहानेबाजी नहीं करना चाहता। ऑफ माइंड फॉर डाउरी विल बी डिस अलाउड, मेरे लिए जो है वो डाउरी क्या है, डिस अलाउड है, मैं डाउरी पसंद नहीं करता। लेकिन अगला स्टेप में देखिएगा, कहते हैं, देखिए ये क्या कहने की जरूरत है, मैं जानता हूं कि आपके राजा बड़े उदार है, उनके पास पर्याप्त धन है, वो जो है हो सकता है कि जो है बहुत सारा जो है दहेज में दे, लेकिन मैं डाउरी वगैरह डिसअलाउ कर देता हूं। फिर क्या कहते हैं, दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ, लेकिन अगर वह अपनी बेटी के नाम पर कुछ देना चाहते हैं, एज आई अवोर्ड, जैसे मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं इनकार नहीं करूंगा। एट स्टार्टिंग, शुरू में, इज माई ऑब्जेक्ट, उनकी बेटी ही मेरा ऑब्जेक्ट है, वही मेरे लिए धन है, मैं उस रिश्ते को कबूल करूंगा। लेकिन दो हिज फेयर डाटर, सबसे बड़ा चीज तो यही इंडिकेट करता है, कलर फीलिंग, फेयर डाटर। अगर डाटर फेयर ना होती तो इट मीन दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट, ये भी एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। एज आई अवॉर्ड, जैसे मैंने प्रतिज्ञा की है, एट स्टार्टिंग, शुरू में, इज माई ऑब्जेक्ट, यही मेरा ऑब्जेक्ट है। ने, यस, वी विल गो टूगेदर डाउन, अब हम लोग दोनों साथ में नीचे चलेंगे। जाते जाते ये संदेश दे दिए कि ये बता दीजिएगा कि हु एम आई, हाउ एम आई, व्हाट आई डिड विथ माई लास्ट डचेस और वाइफ। नाउ ही सेज दैट कि व्हाट आई वांट, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव। फिर कहते हैं कि डे, वी विल गो टुगेदर डाउन, हम सर जी जाते जाते थोड़ा सा उनको जो है पैम्परिंग कर रहे हैं, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला क्या कहते हैं, झप्पी दे रहे हैं। सर जाते जाते कहते हैं, नोटिस नेपच्यून, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिस नेपच्यून। नेपच्यून समुद्री देवता है, कह रहे ये जो नेपच्यून है, जो सी गॉड है, इसको आप देखिए, दो टेमिंग द सी हार्स, एक कैसे एक घोड़े को कंट्रोल कर रहा है, और ये सी हार्स कौन सा है, जेब्रा। दो टेमिंग अ सी हार्स, नेपच्यून इज कंट्रोलिंग द सी हार्स, थॉट है रेयरिटी, यह विचार बहुत मुश्किल से लोगों में आता है। रेयरिटी इट्स अ रेयर पीस, मतलब कि आप ये समझिए यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में, विच क्लास ऑफ इजब्रक, क्लास ऑफ इजब्रक जो है, आप एक मूर्तिकार थे, वो एक गोल्ड स्मिथ थे, अगर इफ आई यूज द वर्ड। और वो क्या थे, उन्होंने उस मूर्ति को ब्रांज में बना करके, ब्रांज की का मूर्ति बना के उनको दिया, और उसमें क्या दिखाया गया है कि देयर इज अ नेपच्यून, नेपच्यून सी गॉड, एंड दैट नेपच्यून इज कंट्रोलिंग द सी हार्स। और हम ये कहते हैं कि ये दिखाने की उस आदमी को क्या जरूरत थी, परहैप्स, प्रोबेबली, इट शोज द मैनर ऑफ ड्यू
Perhaps the Duke was to give the message, I also know how to control the woman. As Neptune is controlling a seahorse or sea god, in the same way, I just want to give you the clue. I also tame women. Yeah, I will tame my wife. I have the art how to control the woman or wife who doesn't hear me, who doesn't you can say go according to my desire, my wishes. So these are the points which you will which you can just get ki stubborn duke, hearty duke, and you find a type of duke that is sinister, a type of duke that is मतलब that is incomparable, उसका कोई तुलना ही नहीं कि किस तरह का है और जहाँ पे ला कानून कुछ इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए. So I have explained. You can give your feedback in व्हाट्सएप ग्रुप बिकॉज आई हैव अनदर मीटिंग. आज काफी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग है मेरी, तो मैं जो है तुरंत अब आपको एग्जिट करूंगा. तो मीटिंग तो